We are going to see the X.509 authentication protocol, or it is the one kind of a directory structure or directory family. X.500 is a directory family. It is a part of your X.500 directory. X.509 is a digital certificate issued to provide a authentication to a specific user or a specific application. So let's start with the X.509. सो ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशंस में ये नॉर्मली दो तरीके के सर्विसेज यूज किए जाते हैं. इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द Kerberos system which is a private key authentication service, but X.509 is a public key directory authentication service. Okay, public key directory authentication service. अब ये directory authentication service कैसे है, और it is totally based on the public key infrastructure जो है उसके ऊपर काम करता है. So let's start with the uh, it came with the ITU in a 1988 standard authentication service and is a part of X.500 directory service standard. मैंने अभी बताया आप लोगों को. Now see X.500 the directory service standards, that means some protocols are written, some kind of rules and regulations are formed. According to based on that rules and regulation, we are going to form a, or we are going to authorize one person, or we are going to authenticate as one person. Okay, so it is consist of a distributed set of servers that maintains a database about user and other attributes. So for a specific authentication, we need the information of your user और and its attribute. User और उसके attributes चाहिए. Attributes मतलब some kind of specific information like uh, ID, ID, address, number, email address, and so many other things are there. Okay, so basically it is a uh, it is one kind of a protocol structure, and it is having a three versions, where in 1993 the version 1 is acquired by the IETF, that is Internet Engineering Task Force. 1993 there is a version 1, 1995 version 2, and 1993 there is a version 3. Okay, so version 3 is a latest one. So it defines the framework for authentication services. These are the various versions which are used to define the framework for authentication services. Again, X.509 मैंने बताया आपको कि एक वन काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेट होता है जिसमें पब्लिक की, यूजर की पब्लिक की, एंड इज साइंड विद द प्राइवेट की ऑफ अ सीए. तो दो तरीके की यहाँ पर चीजें लगने वाली है. एक पब्लिक की होगी यूजर की, और दूसरा होगा प्राइवेट की ऑफ योर सीए. CA is a intermediate person, you can say that, or a intermediator who are having responsibility to authorize one. There is a sender, there is a receiver. Okay, and you just want to uh, make sure that the person where it is a authorized one or not. So you just transfer this request to the CA. CA identifies all the terms related to that target person or receiving person, whatever, and it provides the security and authorization for a specific user. So this is a CA plays the most important part in your X.509 certification. So mainly it is used in a multipurpose internet मेल एक्सटेंशन जो भी है आप लोगों का ईमेल फैसिलिटीज़ होती है, तो उसमें यूज़ होता है. आईपी सिक्योरिटी में यूज़ होगा. सिक्योर्ड सॉकेट लेयर जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसमें आप लोगों के ये नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं. आई थिंक सो इट डिफाइंस द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. सर्विसेज तो देता ही है इस बेसिस पे, based on the number of authentication protocols. Okay, so it came up with the public key cryptography and digital signature. कोई एक स्पेसिफिक वहाँ पर अल्गोरिदम नहीं है. वहाँ पर आप लोगों के कोई स्टैंडर्डाइज अल्गोरिदम नहीं है जैसे RSA रिकमेंड करता है. जिसमें कोई एक पब्लिक की हम लोग यूज़ करेंगे या फिर डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे. It is a widely used certification, and public key certificate associated with each user. हमारे पब्लिक की ऑथराइजेशन होता है. क्यों ये कहाँ से क्योंकि जनरेट होता है? बिकॉज वी आर जनरेटिंग इट बाय द ट्रस्टेड सर्टिफाइड अथॉरिटी. सर्टिफिकेशन अथॉरिटी CA जो पर्सन होता है, इट विल प्रोवाइड
this certification for the uh, sender and receiver जो भी होंगे उनको authorize करने के लिए. So CA issues the certificate, and whenever you are going to write or draw a specific structure of your X.509, so you just note down CA as a um, mark. This symbol is used A. This symbol is used to represent the certification from the CA side. CA को notation करने के लिए ये आप लोग वहाँ पर लिखते हैं. Now, एक्चुअली व्हाट इट कंटेन्स, सर्टिफिकेट में क्या होगा, कौन सी चीज़ें वहाँ पर एक सर्टिफिकेट में होती है. तो इट कंटेन द वर्जन नंबर वेदर इट इज़ 1 2 और 3. इट कंटेन्स द सीरियल नंबर विद अ यूनिक विद इन अ सी ए आइडेंटिफाइंग द सर्टिफिकेट. एक सीरियल नंबर होगा आपके सर्टिफिकेशन का. सिग्नेचर अल्गोरिदम आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर के लिए एक अल्गोरिदम आप लोगों ने कौन सा यूज़ किया. आइडेंटिफायर मतलब जो सर्टिफिकेट इशू करवाने वाला है वो कौन सा एल्गोरिदम के थ्रू उसको ऑथराइज करने वाला है. इश्यूअर X.500 नेम, सीए का नाम, कौन इशू करने वाला है, उसकी वैलिडिटी स्टार्टिंग से कब तक होगी और कहाँ कहाँ तक होगी, डेट्स कितने दिनों के लिए वैलिड होगा. उसके बाद नेम ऑफ द ओनर, कौन है, हु इज़ द जनरेशन, हु इज़ द सेंडर साइड. द पब्लिक की इंफॉर्मेशन जैसे कि कौन सा एल्गोरिदम हमने यूज़ किया है, पैरामीटर्स क्या है, कौन सी की है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन. उसके बाद यूनिक आइडेंटिफायर है, सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर है इशूअर का और सब्जेक्ट का. एक्सटेंशन फील्ड है जो नॉर्मली V3 में ही यूज होते हैं, वर्जन 3 में. और लास्ट में एक सिग्नेचर वैल्यू दैट इज नथिंग बट अ हैश वैल्यू. So all these information is stored or contained in a X.509 certificate. अब हमने देखा कि 3 तरह के वर्जन्स थे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3. तो कैसे कैसे उसमें एडिशन होती गई देखो. तो अभी हमने देखा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है. तो वर्जन, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, वॉट एवर द एल्गोरिदम यूज, पैरामीटर, इशूअर नेम, नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, दीज आर द वैलिडिटी. सब्जेक्ट का नाम किसके लिए हम लोग देने वाले हैं वो, और ये एल्गोरिदम, पैरामीटर और की. दीज आर द वेरियस. वर्जन 1 contains all these information. Version 2 contains the issuer identification number and subject identification number. Okay, and then version 3 comes with the extension and the number of signature algorithms. Okay, all versions देखो यहाँ पे लिखा है. So this is how the X.509 certificate works. This is one kind of example for the same. You can consider it. Like, see, version 1 is there, serial number is there, MD5 algorithm is used, issuer that is CAOU किसने किया है इशू वो, वैलिडिटी सी ओवर द वैलिडिटी, सब्जेक्ट दिया है किसका, सेंडर रिसीवर का, एंड द सब्जेक्ट का पब्लिक की देख सी इनक्रिप्टेड फॉर्म में की है वहाँ पर. देन सिग्नेचर सील, सी सिग्नेचर सील यहाँ पे है और इशूअर कौन इशू करवा रहा है उसका सील. So this is how one kind of a digital X.509 certificate. Then after that the number of versions are increased, then the information is also identified there. So this is all about the X.509 certification. In exam you can write all these necessary things. You just explain in 1 or 2 lines all these information, what are the X.509 certification contains. ठीक है, thank you.